मारा तो उसके अंदर में क्या था वो सीमेंट रखा मारा So उसके अंदर में that, क्या था वो what was inside it? सीमेंट रखा Cement and steel. देवी है साक्षात विराजमान है So Nrisimhadeva is directly there. विजिबल और इनविजिबल मात्र है It's just a matter of being visible or invisible. दृश्य और अदृश्य मान का Visible or invisible. भगवान सर्वत्र ही Actually, Lord is everywhere. नृसिंहदेव की जो धाम जो विष्णु धाम They are both of Nrisimhadeva. धाम है जो आप देखते हैं ना जो दिखाते हैं जो है भगवान के अवतार जो जितने भी अवतार है All the avatars of Bhagavan, रामादि all their abodes are eternal. अरे आप कहाँ जा रही हो Where are you going? तो क्या करो Oh, I'll just have darshan and prasada. But I will give you prasad. कौन सा अच्छा इनको भी तो हमें प्रसाद देना पड़ेगा I also need to give some prasada to her. हमारे दरबार में कोई आता है ना If any person comes to my room, Gurudev used to say, हाथ में कोई nobody should go empty-handed after they come to me. Do you understand? वो शिष्य हो Whether disciple or not disciple or डिवोटी हो devotee or non-devotee, doesn't matter. Whoever comes, एक कुत्ता भी आ जाए even if a dog comes. Take this prasadam. और आपके साथ कौन है Who is with you? I'm alone. और भी ले Take more. सब अच्छा लगा उधर जो है सबको अच्छा लगा गुरुदेव एक मेरे को बोल भी रही थी आज आने के लिए साथ में बट मेरा खुद अचानक से आने का हुआ ना मैं उनको कल ही ले आऊंगी हाँ कल लिया कल कब ले आओ When will you bring tomorrow? हाँ, क्योंकि शाम के समय इस समय जो है थोड़ा व्यस्त रहेंगे हाँ 12 बजे क्या चाहिए Okay, come at 12 o'clock. नहीं, पीछे कोई भाग मत जाना Don't go to your house. भागने वाला नहीं है ना हैं? मेरा दुख होता है कोई प्रसाद नहीं लेकर जाना I become upset if somebody goes without taking prasad. I become upset. विश्वानुनंदिनी एंड परिकर है ना हाँ इधर Come here. एक पानी और एक कटोरी यहाँ पर रखो रोटी प्रसाद देने के बाद Keep here a cup of water and like a cup and water. Then after giving prasad, I can wash my hands. And the gamcha also. Yeah, like this. हो गया अच्छा लग रहा है क्या चाहिए अच्छा हाँ कथा सुनो। Okay, listen to Harikatha, everyone. क्या फूल की माला भी ले Did you bring the garland of flowers? अंदर आ जाएंगे ना अरे अखिलेश कहाँ आए नहीं शादी करवा दी आपने मैं कहाँ शादी करा इन लोग को भी बुलाया नहीं शादी में उसने आप कैसे नहीं गए थे आप कैसे बैठो आप चेयर ले लो चेयर नहीं पूछा कि पैर में लगेगा अरे नहीं चेयर चेयर ले नीचे बैठ नहीं ऊपर आप ऊपर बैठ दे दो आप ये लो निकाल दो ठीक है अरे नहीं और भी जगह कम हो जाएगी ना हम लोग यहाँ खुल लोग बैठे जगह यहाँ खुल जाएगा आप सो हम सोचेंगे आपके लिए बोल रहे हैं देखिए जगह ले जाएंगे आगे ये सब रिकॉर्ड है आपके फोन लिए क्या बोला So what was talking about? भगवान का विग्रह है All the deities of Bhagavan. विग्रह सब नित्य है All they are eternal. मत्स्य कूर्म वराह आदि भगवान के जितने भी Matsya, Kurma, Baraha, all the deities of Bhagavan, all their abodes are also eternal. This is called, actually, each vigraha has one specific Vaikuntha dham. भगवान की
वैकुंठ धाम को लेकर के कहा जाता है महावैकुंठ धाम। Actually, all these Vaikuntha dhams, they are called Mahavaikuntha dham. क्या बोला? एक एक धाम के कहता है वैकुंठ धाम कहा जाता So each of the dhams is called Vaikuntha है। dham. जितने भी वैकुंठ धाम है उसके All the Vaikuntha dham, धाम को कहा जाता है महावैकुंठ धाम। they are called Mahavaikuntha. यहाँ पर भी कहते हैं क्या बोले ये वैकुंठ धाम से लेकर के महावैकुंठ धाम कहाँ तक परिधि है? So Mahavaikuntha is what? All the Vaikuntha dhams also includes Ayodhya, धाम की Dwarka and Mathura is also included in Mahavaikuntha dham. This is included. पर महावैकुंठ लिखा है। एक So- वैकुंठ धाम होता है। So that is Vaikuntha dham. समस्त ये धाम के जो है All the Vaikuntha dhams together, all together of all the abodes of different forms of Vishnu, they are called Mahavaikuntha dham. So one thing is Vaikuntha dham. एक एक स्टेट्स मान लीजिए है और फिर जो है एक So there is Vaikuntha dham and Mahavaikuntha dham. महावैकुंठ धाम जो है Mahavaikuntha dham. वृंदावन की जो परिखा जो है जिसको हम कहा जाते हैं गोलोक कहा जाता है। गोलोक के नीचे जितना भी सब ये महावैकुंठ धाम में पड़ जाता है। All the abodes that come under Golok, like up until Golok, everything is Mahavaikuntha dham. Means all the Vaikuntha dhams, Ayodhya, and also Mathura and Dwarka Mathura. This is all Mahavaikuntha dham. But Goloka and Vrindavan, Goloka Vrindavan, it's separate. परिखा जो है जिसको हम कहा जाते हैं गोलोक कहा जाता है। गोलोक के नीचे जितना भी सब ये महावैकुंठ धाम में पड़ जाता है। उसके गोलोक ही गोकुल कहा जाता है। Golok is also called Gokul sometimes. इसमें इतना ही कहा जाता है सौकिया It's just a matter of difference of, है गोलोक धाम ने जो धाम में तले तो चस like Goloka has a little bit also of a Swakya bhav, like mood as like married couple. है। तो ये जो धाम जो कहता है एक होता है वैकुंठ धाम और एक होता So है there is Vaikuntha dham and Mahavaikuntha dham. एक साधारण विचार में होता है So normal conception वैकुंठ भगवान के जितने भी अवतार is that all the avatars of Bhagavan, धाम की वैकुंठ धाम कहा जाता their abodes are called Vaikuntha है। dham. धाम विष्णु वैकुंठ Abodes of Vishnu or abode of Nrisimha Vaikunta. रहते हैं वहाँ पर। The deity is there eternally. नित्य विराजमान So Bhagavan is eternally in each of these abodes. Do you understand? जो पागल बना दे फिर शिव लोग कहाँ पर है? And she's asking about Shiva. Gurudev, what? You're crazy? हैं? You're making me crazy. शिव लोग कहाँ पर है? Where is Shiva Lok, the abode of Shiva? शिव लोग पहले सुनो। Listen to me first. डायग्राम दिखाई नहीं है। I have to show you the diagram, right? For you to understand. ये शिव लोग पे सदा शिव लोग कहा जाता है। So there is the Sada Shiva Lok. शिव लोग जो है Shiv Lok. शिव लोग के एक होता है कौन सा शिव? So which Shiv? कैलाश शिव। Kailas Shiv. कैलाश शिव आदि जो है ये समस्त जो है माइक धाम के अंतर्गत। They are inside Maikadam, शिव जो है the abode of Maya. But Sada Shiv is under Vaikuntha Dham, one specific place. Sada Shiv. विष्णु ही है। Sada Shiv is Vishnu himself. एक तरफ जो उसके विष्णु धाम ही कहा जाता है। He's also one kind of Vishnu Dham. What did I say? सदाशिव लोग जो है उसके भी सदाशिव लोग स्वयं भगवान विष्णु ही है। And Bhagavan Vishnu himself स्वयं भगवान विष्णु ही सदाशिव के रूप में प्रकटित हुए हैं। appears in the form of क्योंकि Sada Shiv. ध्वंस आदि कर्ता जो है Because like to destroy, वो जीव तत्व के द्वारा नहीं हो पाता। a Jiva-tattva cannot do the destruction, destroy. That's why Vishnu रूप में ध्वंस के कार्य करते हैं। appears in the form of Sada Shiv. जिस कल्प में In some kalpas, जीव नहीं मिल रहा है that there is no उस समय स्वयं qualified Jiv. सदाशिव के रूप So में then Bhagavan comes in the form of Sadashiv and performs the role of destruction. होता है वैराज There are two kinds of Brahma, होता है Vairaj Brahma and हिरण्यगर्भ ब्रह्मा। Hiranyagarbha Brahma. वैराज ब्रह्मा जो है जीव तत्व है। Vairaj Brahma, he is Jiva-tattva, ब्रह्मा जो है and Hiranyagarbha Brahma तत्व है। is Bhagavata. कल्प में ऐसे कई But in not all the kalpas you can get a ऐसे सृष्टि qualified Jiva to do the creation. In those moments, Swayam Bhagavan, ये होकर क्या बोले हिरण्यगर्भ ब्रह्मा हो गया। he manifests as Brahma. The name is Hiranyagarbha Brahma, and he creates. ब्रह्मा पद प्राप्ति कर ब्रह्मा एक पद मात्र है Brahma is only a post जो सजन्म तक
for 100 lives, वर्णाश्रम धर्म पालन आदि those who follow Varnashram Dharma ठीक से properly, ये सब continuously, जो अपमान for 100 lives. 100 जन्म जो If for 100 lives आदि करते हैं you follow properly Varnashram Dharma, ब्रह्म पद प्राप्त करते you get the position of Brahma. पद प्राप्त करते हैं। फिर भगवान उसे शक्ति संचार करके Then Bhagavan gives a potency to this Jiva, and the Jiva is able to create. ब्रह्म संहिता में है ना, In the Brahma Samhita it's explained. जिस प्रकार Just like सूर्यकांत मणि, the Surjakanta mani, मणि होता है सूर्यकांत, it's one kind of वो सूर्यकांत मणि सूर्य के सारे तेज one kind of gems, कर लेते हैं, like one kind of special jewel. सूर्य के तेज उसमें This Surjakanta mani, हो जाता है, उसको देख करके ऐसे लगता है all the sunshine, I mean the light of the sun, is kind of reflected in this special stone, Surjakanta mani. When you look at the stone, looks like a second sun, you know. वो द्वितीय एक Looks like you're looking सेकंड to a के second sun, सूर्य जैसे लगता you know. है, उसे कहते हैं सूर्यकांत मणि। It's called सूर्य के Surjakanta समान mani. ही है, वो सूर्य नहीं है, किंतु सूर्य It's not the sun, but तेज it's. को क्या लेते हैं, मेरा टोपी तो ठंडा लगे Give me my hat because I'm feeling cold on my head. है। अब किसी कल्पों में, In some kalpas, किसी कल्प में ऐसे योग्य जीव ही नहीं मिलता है, you cannot find a qualified jiva 100 for that. जन्म तक That for 100 lives वर्णाश्रम धर्म पालन करे। follows the Varnashram Dharma एक like नहीं है, this. ये जन्म करा अगले जन्म ऐसे छोड़ दे, ऐसे नहीं It's not like one life you follow, another life you don't follow. No, you have to follow continuously the Varnashram Dharma. है, वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, Whether like वानप्रस्थ Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha, की Sannyas, इस बोले वर्णाश्रम धर्म के you have to follow properly the Varnashram Dharma. तब वो जाकर के Then ब्रह्म पद को प्राप्त करते हैं। can get the और position ब्रह्म of पद Brahma. प्राप्त करने पर भी तब भी उसके द्वारा सृष्टि कार्य नहीं होगा। तब Even भगवान क्या करता है after उसमें, getting the post of Brahma, still you cannot create. What happens? God must give you the power to create. शक्ति संचार कर Shakti. Then you can create. प्रकार The Jiva उदाहरण can दे create. रहे हैं, The example is यथा, given. Just like हैं, अस्कांत मणि, बस सूर्यकांत मणि, Ayaskanta mani अस्कांत or मणि Surjakanta mani. है। वो सूर्य के Like I जैसे told, तेज जो है, the उस light अस्कांत मणि of व the सूर्यकांत sun मणि में is like उसमें reflect caught हो जाता है। or उसके reflected द्वितीय inside this एक gem, सूर्यकांत में। this एक jewel. When you द्वितीय look एक at this special gem, a crystal looks ठीक like a उसी second प्रकार sun. भगवान क्या करते Sorry. हैं, So in the ऐसे same way, योग्य जीव Bhagavan, के हृदय में in the heart of सारे this शक्ति qualified संचार Jiva, करके तब God उसके द्वारा gives ये- all the potency. Then this Jiva is able to तो create. ये जीव क्या हो गया, So this ये हो गया Jiva जीव तत्व हो गया। is also किंतु किसी Jiva-tattva, हर right? कल्प में ऐसे मिलना बहुत But कठिन होता है। it's very hard to get this kind of Jiva in all the kalpas, all days of Brahma. That's why Bhagavan himself, sometimes अधिष्ठित he होकर के he वो takes the कार्य आदि position करते of हैं। Brahma. उस समय उस ब्रह्मा के कहा जाता है This Brahma is called हिरण्यगर्भ ब्रह्मा Hiranyagarbha Brahma. है। जब ब्रह्म पद के पद में अभिष्ट When the होकर Jiva ब्रह्म पद में अधिष्ठित होकर के Gets the position सृष्टि of कार्य Brahma, आदि करते हैं, उसके and कहा creates. जाता है वैराज ब्रह्मा। it's called Vairaja Brahma. उसी प्रकार शिव तत्व में भी ऐसे कहते जा रहे हैं। शिव तत्व में जैसे फिर 100 जन्म So for 100 lives, नहीं 100 का ब्रह्मा के आयुष काल होता है। आयुष काल समझे, आयु कितना होता है, so what is 100 the साल होता है। age of 100 Brahma? साल के बाद वो छोड़ देते 100 हैं, life, 100 years. फिर वो मुक्त Sorry, Brahma lives for 100 years. So after he lives for 100 years, then पे चले जाते हैं। काल होता है शिव तत्व में जैसे फिर okay, so who 100 becomes जन्म Shiva? है, नहीं 100 का 100 lives. काल होता है। Sorry, not 100 आयुष lives. काल समझे, The lifespan of Brahma 100 is साल होता है। 100 100 years. साल के बाद वो छोड़ After देते 100 years, he हैं, फिर he वो मुक्त होके चले जाते हैं। gives कोई up. ब्रह्मा I mean, ऐसे करते he हैं, delivers and goes away. भगवान उसके शिव Some- के पद अधिष्ठित करने के लिए उसको कार्य दे देते हैं। Sometimes Lord gives this Brahma, after he finish his duty, the position of Shiva. जैसे रिटायरमेंट के बाद उसको Like after retirement, उसके राज्य में, sometimes you can still work. तो वो जीव जो है जब आते हैं, वो This जीव Jiva तत्व शिव जो है वो Is actually in the position of Shiva, but is actually a Jiva. है। किंतु ऐसे जीव भी मिलना भी यदि कठिन हो, But if it's very hard to get a Jiva like this, then Swayam Bhagavan तो himself स्वयं ही शिव पद में अधिष्ठित होकर के is धर्म से आदि करके उसी कहा जाता है takes the सदाशिव। position of Shiva and destroys, then that Shiva is called Sadashiv. एक He is पहला Vishnu शिव Tattva. जीव तत्व में So आ जाता है, Kailasha Shiva is a Jiva-tattva, विष्णु a तत्व में। Jiva-tattva, and इसलिए जब आप जो बोल रहे हैं, Sadashiv is Vishnu ये Tattva. सदाशिव So बस, तत्व
तत्व जो है ये विष्णु Sadashiv Tattva is actually Vishnu Tattva. है, समझे? Understand? ये है। अच्छा, ये सदाशिव लोक कहाँ पर पड़ता है? Where is Sadashiv Lok? इस ब्रह्मांड के पार करके 8 दीवार को पार करना पड़ता है। So, actually, to go beyond this material universe, you have to cross 8 layers or 8 walls. मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। These 8 layers of or 8 walls, they are made of earth, fire, water, air, ether, and also mind, intelligence, and ego. ऐसे 8 द्वार के पार So when you करने cross के these पश्चात 8 layers, है क्या? then अष्टावरण कहा जाता है। yeah, it's called Ashta अष्टावरण Abaran, के 8 पास- coverings. पास- इसके बाद होता है After that, विराजा लोक होता है। there is Viraja Lok, विराजा नदी, ब्रह्म ज्योति धाम Brahma Jyoti Dham. है। नहीं, मुक्ति लोक तो फिर आगे जाएगा। Mukti Lok इसके is बाद after. अंधकार लोक जो होता है, फिर जाकर के ज्योति धाम कहा जाता है। Then there is all the darkness, then the light. है। I'll tell के again. पास इसके बाद होता है After that विराजा लोक होता है। is Viraja Lok, Viraja Lok, विराजा नदी, ब्रह्म ज्योति धाम Brahma Jyoti Dham. है। नहीं, मुक्ति लोक तो फिर आगे जाएगा। Lok is इसके बाद अंधकार लोक जो होता है, फिर जाकर के ज्योति धाम कहा जाता है। there is darkness, then the light, Jyoti Dham. आसान, ज्योति धाम। Jyoti में Dham. केवल वो ज्योति, उसके ब्रह्म लोक। ज्योति धाम is ज्योति only के light. पार में ये रहता है सदाशिव लोक। सदाशिव लोक है आसान, ज्योति धाम। ज्योति में केवल वो Jyoti उसके Dham ब्रह्म is लोक only है। ज्योति light. धाम This is के called बाद Brahma में Lok. ये रहता है After सदाशिव लोक। Jyoti Dham, then there is सदाशिव Sadashiva लोक Lok. के बाद ही After रहता Sadashiva है Lok, then there is वैकुंठ धाम। Vaikuntha Dham. इसलिए वैकुंठ के नीचे के जो भाग जो है So उसके कहा जाता under है Vaikuntha, सदाशिव it's called लोक। Sadashiva आप Lok. वो डायग्राम में देखना, वो You जो can see that नीचे diagram, दिखाता है। that picture, you know. ब्रह्म संगीत के अनुसार ये लोग ने किया। The devotees did that diagram according to Brahma Samhita. If you see that image, you know, you'll never forget these statuas. You know, otherwise I'm speaking and you'll forget. इसके बाद जो होता है वैकुंठ धाम। After that, Vaikuntha Dham. क्या होता है ने भगवान विष्णु अनेक रूप धारण करते In Vaikuntha Dham, Bhagavan Vishnu manifests many forms. Actually, all the avatars, they are unlimited हैं। avatars. सबके नित्य धाम है। All the avatars, they have a और नित्य specific स्वरूप eternal में abode. विराजमान होते हैं। And they are always manifest in an eternal चतुर्भुज form रूप में with अधिक 4 रूप में arms. चतुर्भुज रूप में रहते Generally, हैं। generally Bhagavan is in 4 arms. विष्णु धाम कहा जाता है। It's called Vishnu Dham वैकुंठ धाम कहा जाता है। or Vaikuntha Dham. ऐसे अनंत करोड़, जैसे मत्स्य- There are unlimited billions of मत्स्य अवतार Vaikuntha Dham. धाम है। For example, मत्स्य Matsya Avatar, भगवान he lives in, मत्स्य he रूप में lives विराजमान होते हैं। in one भगवान के planet जितने भी in Vaikuntha. अवतार हैं, Vaikuntha. नित्य है। और उनके All the विग्रह avatars of Bhagavan, they are eternal and they have eternal form. है। नित्य धाम है जिसमें रहता है। Nitya Dham, they have an eternal abode. जब लीला की प्रयोजन होता है, When जरूरत होता है, the Leela वही धाम से is necessary to be भगवान performed, योगमाया के then द्वारा Bhagavan इस जगत में प्रकट हो जाते हैं। comes from the eternal abode. Like for example, a specific avatar of Bhagavan comes from his eternal abode by the arrangement of Yogamaya, this form. Bhagavan comes to this world, this लीला specific करके फिर इस avatar. जगत में चले He performs his leelas, then again comes back to the spiritual world. जैसे एक कह रहे हैं, For example, नरसिंहदेव भगवान की वो नित्य धाम, बराहदेव के सब नित्य धाम है। Nrisimhadeva has an eternal abode, Varahadeva also. प्रहलाद महाराज विराजमान है, Prahlada Maharaj is also there with Nrisimhadeva. नित्य परिकार है। He's an eternal associate of Nrisimhadeva. Prahlada is an eternal associate. वहाँ पर एक स्वरूप में रहते हैं। He stays there, और जब there भगवान in one specific लीलाधिकारी form. जन प्रहलाद महाराज जी आ रहे So हैं, Bhagavan is performing leelas and he प्रहलाद comes. महाराज जी जब आ रहे हैं, When तो उस Prahlada समय Maharaj भगवान क्या comes, करते हैं, ऐसे कोई शुक्रदेवान जीव को जब प्रहलाद के हृदय में प्रवेश करा देते हैं। तो प्रहलाद महाराज जी जब आ रहे हैं, तो और जब भगवान so when लीलाधिकारी Bhagavan प्रहलाद महाराज जी आ रहे हैं, is doing leela, then he's coming to this world like Nrisimhadeva, and Prahlada Maharaj also comes. प्रहलाद महाराज जी जब आ रहे हैं, When Prahlada Maharaj तो उस comes, समय भगवान क्या करते at हैं, that time Bhagavan also शुक्रदेवान जीव को जब प्रहलाद के हृदय में प्रवेश करा देते हैं, makes a jiva who has a lot of sukriti enter in the heart of Prahlada Maharaj when the Prahlada Maharaj from spiritual world is coming. है तो ये मूल प्रहलाद कौन है? The main Prahlad is who? नृसिंह की जो Who is he? केवल परिकर है। The eternal associate of Nrisimhadeva. But जो in his ऐसे heart, जीव
Some jiva also who has done अपने इष्ट देव के अनुसार उनके उसे प्रवेश करा देते हैं। according to his own ये विचित्र worshipful deity also enters the heart of Prahlada Maharaj. बात है। It's something very interesting, huh? जीवों की जैसे जैसे According ये- to ये the होता है, क्या बोले ना वो पोटेंसी रहता है, potency in the hearts of the jivas. पोटेंसी समझ में नहीं You आया? didn't understand? जीव के Okay, जिस प्रकार continue. स्वरूप है, According to the swarup of the उसके jiva, इष्टदेव कौन होगा? who will be the Ishtadev worshipful deity of each jiva, right? महाभगवान है आप लोग। You are very fortunate, you all of you, इष्टदेव कौन है? because who is your worshipful deity? राधा कृष्ण। Radha and Krishna. उसी प्रकार अनेक So in the same way, जीवों के इष्टदेव there are many है, jivas whose worshipful deity is Narayana or Ram मत्स्य है, or कूर्म Matsya है, or Kurma, etc. वो उसकी आराधना करते They worship them. हैं। जब वो जीव जब ऐसे When the आराधना jiva आदि करते-करते worships like सिद्धि this, हो जाता है, it's almost in the siddhi perfection stage. Then Bhagavan is going to do his lila. उसमें जोगमाया के द्वारा उस Then जीव को क्या Yogamaya arranges that this jiva नित्य परिकर के उसमें प्रवेश will करा enter के inside the फिर nitya-parikar. उसको रसा-साधन करके फिर वहीं पर लेके चले जाते हैं। We'll relish the rasa की कथा and also later we go to the spiritual world. धरा जो है, For example, Drona Dhara. They are Jiva-tattva. क्या बोले? What did I say? हाँ, ये द्रोण धरा की Drona कथा and जानते Dhara. हैं। You know, we hear about ये them. जीव तत्व है, They are Jiva-tattva. हैं। ये बहुत साल तक आराधना आदि की They worship for many years. है। हाँ, समझिए। Do you understand? जब भगवान कृष्ण When लीला आदि Bhagavan कर रहे Krishna हैं, was doing हैं, pastimes, ये द्रोण धरा के हृदय में क्या था? so what Drona and Dhara they had in their hearts? Actually, they wanted to relish Vatsalya-rasa, right? नंद So, जसोदा जब प्रकट हो रहा है, when Nanda just showed that they were manifesting from the spiritual world coming, जसोदा कृष्ण के नित्य Nanda just showed that they are the eternal parents of Krishna. चलते हैं, अनुग्रह Right? भक्तानां मानुषं देहमाश्रितम्। तो अनुग्रह करके सब भगवान So when जब Bhagavan लीला was आदि प्रकट coming, कर रहे हैं, अपने नित्य माता पिता परिकर की जब प्रकाश कर रहे हैं, manifesting his eternal parents in this world, Drona and Dhara उसमें प्रवेश करा दी। entered what? नंद जसोदा में प्रवेश करा दी। They entered inside the body of Nanda and Jashoda और रस बत्सल रसाधन का। to relish Vatsalya-rasa. ऐसे ऐसे सुयोग्यवान जीव के जो है So- भगवान ऐसे प्रवेश करा दी। God gives this opportunity and makes these very fortunate like living entities and who got this opportunity to enter the body of the nitya-parikaras. प्रहलाद महाराज So in the जो है, same way, Prahlada Maharaj. Who is Prahlad? ये नित्य परिकर है, He's an eternal ये associate. जीव तत्व नहीं है। He's not a Jiva-tattva. है? आप इसको समझो, Try to understand this. भगवान के जो है ये जीव तत्व नहीं होते, ये सब परिकर तत्व है। इसलिए Bhagavan has his चैतन्य eternal प्रभु associates जीव and they दया come with बड़ी him when he comes to this स्वपार्षद world. सहबोतरी भक्तों ठाकुर लिख रहे हैं ना, Bhaktivinoda Thakur even wrote about it. सिद्धांत भूल जाओगे। You'll forget the Siddhanta. चैतन्य प्रभु जीव दया स्वपार्षद Swaparshad. है, पार्षद ने परिकर Parshad means the associates, the Parikaras. और अपने जो विग्रह सब धाम को जगत में प्रकट करा रहे हैं। God manifests his abode and his associates in this world. तो ये जो लीला आदि होते जा रहे हैं, ये प्रहलाद महाराज कौन हो गया? So for example, now who is Prahlada Maharaj then? नृसिंहदेव के नित्य परिकर है, The eternal associate of Nrisimhadeva. Yes. है। ये नित्य परिकर है, लीला आदि कर रहे हैं। He's उस doing समय जब pastimes. प्रहलाद महाराज जो आए हैं, उस समय कोई जीव को उसमें प्रवेश Then करा when he came, another Jiva also entered his body. दिया। निखिल चौदस में बोला कि नहीं For बोला? example, in the day of Nishyan Chaturdasi, we spoke about जब नृसिंहदेव भगवान that when Nrisimhadeva Bhagavan, की पूर्व जन्म की कथा भी बता रहे हैं। what is the previous life history of Prahlad? नित्य परिकर जो प्रहलाद के जीवन की कथा नहीं है, This is not the life of the eternal किसी जीव associate की Prahlad. कथा परिकर It is of some Jiva who entered his body. भक्ति विलास में लिख रहे हैं। For example, Hari Bhakti Vilas explains a story of Nishyan Chaturdasi. हैं। ये निश्चित चतुर्दशी व्रत करने से फल क्या है? What is the fruit of performing Nishyan Chaturdasi vow? ये हाँ क्या नाम था? So what is this name? नाम मैं भूल गया। I forgot now. कि बसु नाम से कोई एक Bashu or something, so one person. चार पुत्र था। He had 4 sons. हैं। आज सुनिए, ये प्रहलाद जो है ये छोटा था। Prahlada was the youngest. Youngest or the oldest now, I forgot. वो Anyway, में आसक्ति था। he had attachment for one prostitute lady. अकस्मात जो है वो Then suddenly, ये व्रत कर लिया था। he performed this vow नरसिंह चतुर्दशी के व्रत। of Narasimha Chaturdasi, you know. और व्रत करने से उनके Then सारे because of पाप this, नष्ट all हो his गया। sins were destroyed. And भगवान को in the end, he attained Bhagavan. ये प्रहलाद जो कह रहे हैं, So this Prahlad वो प्रहलाद ये प्रहलाद एक नहीं है। and that Prahlad of the eternal abode is not the same. They are not the same persons. हैं? ये प्रहलाद पूर्व जन्म में कौन था? So the story is there. Who was Prahlad in the previous life?
ये कोई बुद्ध के पुत्र था, उसका नाम जस्ट मैं I just now forgot the name. हाँ वो होता है नहीं नहीं So this Prahlada and that Prahlada are not the same. No. एक जीव तत्व है और एक परिकर तत्व। So one is Jiva-tattva, another is parikara-tattva. वो जीव तत्व, उसमें जीव तत्व प्रहलाद के अंदर में जीव तत्व प्रवेश हो जाता है। So Jiva-tattva enter in the body of Prahlada, who is the eternal abode, and eternal associate. वो Sorry. नृत्य-परिकर है। देखने में तो एक ही जैसे लगते हैं। Looks like they're same. ज़्यादा बोले तो आपके confuse If I speak too much, you'll become confused. महाभागवत जो होते हैं, Even a Maha-bhagavat. महाभागवत के इतने कष्ट भोग क्यों कर रहे हैं? Why sometimes the Maha-bhagavat, they are suffering so much? कोई जो Actually, they are not suffering. What happens is, कृतवान जीवा some Jiva who has Sukriti है, उससे महाभागवत अंदर में प्रवेश कर enters उसको लीला आदि करने के लिए, जगत जीवों की शिक्षा देने के लिए enters in the body of Maha-bhagavat so that he can also give teaching to the Jivas of this world and perform Leela. माँ जो है जो होते हैं जब महाभागवत के इतने कष्ट भोग So sometimes we are, why the Maha-bhagavat is suffering so much or suffering some disease? Actually, it's not his. Actually, what happens is that some Jiva-atma, Jiva who has Sukriti, उससे महाभागवत अंदर में प्रवेश enter in the body of this Maha-bhagavat just to show the Leela, to perform a Leela, to give teaching to the Jivas of this world. वो सोच रहे हैं जो वो भोग रहे हैं And you think he's suffering. Actually, he's not suffering. इसमें से विचित्र विचित्र जी लीला This is कहाँ है उसमें? very interesting, huh? But yeah, this happens. हम देख रहे हैं जो गुरुदेव भोग रहे For example, Gurudev is suffering some disease or something. But if Gurudev is an eternal associate, how would be he suffering some disease? हैं वो रोग सब कैसे हो गया How would be he sick? How would he be sick? Actually, some punyatma. Punyatma jiv means a jiva which has punya, pious deeds. God makes something with this jiva. What does he make? लीला के लिए For the sake of pastimes of the Uttama Bhagavat, सब कैसे हो गया तब then Bhagavan, पुण्यात्मा जीव so this punyatma jiv, this jiva who has punya, Bhagavan, लीला के लिए for the lila in this world, to show to the people of this world, ये दिखा देते हैं क्या बोले जिसको कहा जाता है इंद्रजालिक लीला दिखा देते हैं so then Bhagavan shows this indrajalika-lila, illusionist इंद्रजालिक लीला pastimes, दिखाते हैं like illusion. Why? सजनों के जो है उसकी उनके प्रति सेवा भरा ममता दिखाने के लिए Because though the devotees will become more attached to the sadhu, they will serve him with possessiveness, but the demons, they will be they will वंचना करने के लिए be cheated. दो लीला हो जाता So two leelas happen at the same time. है दुष्ट लोग कहने आई ये संत महात्मा थोड़ी So the bad people, they will say, oh, he's not a saint. Come on, it's not possible for him to be a saint. If he would be a saint, why is he suffering just like us, like having some disease or some pain and suffering? Useless, he's not a saint at all. Of course not. उसको क्या कहते हैं So then these demons, they are cheated. वो निंदा वंदना आदि की They start to criticize him, and then साइड कर देते they will go aside. They'll go astray, like God will send them away. जो But सेवक जो है those who are servants, they will have so much love and affection. They will serve with love and affection and possessiveness. In this way, they will serve with possessiveness, and they will like increase their spiritual life. यही तो लीला होता This is the lila what is going on. है जैसे लीला आदि करते जैसे माधवेंद्र पुरी For example, Madhavendra Puri Mahaprabhu, उनके दो शिष्य के बारे he में had लिखा है। two disciples. एक होता है ईश्वर One, Ishwara Puri Mahaprabhu, were serving him, रामचंद्र पुरी निंदा आदि करने लगे and Ramachandra Puri was criticizing him. रो रहे हैं, आप तो ब्रह्म Gurudeva, why are you crying? Gurudev, you are Brahma. कोई रोना आता है Brahma does not cry. All we are Brahma, Gurudev. है। यद्यपि रामचंद्र पुरी परिकर है तथापि लोग को शिक्षा दी दे रहे हैं So even though Ramachandra Puri is also a parikar, he's just giving teaching to us and माधवेंद्र पुरी doing this. ये तुम मुझे Then Madhavendra Puri Mahaprabhu says, कहाँ oh, भाई कृष्ण प्रेम में राधा जी के why are you प्रेम calling me में Brahma? I am actually तुम मुझे कहा क्या feeling ब्रह्म separation in the mood of Shrimati Radhika, and you're calling me like saying that I'm Brahma and crying for like a Brahma. Actually, I don't want to see your face again. लीला आदि वही रामचंद्र पुरी महाप्रभु की निंदा भी करने लगे So अपने this गुरु के निंदा की Ramachandra Puri, he criticized his own guru. Later on, he criticized also निंदा किया कितने बार Mahaprabhu. क्या रे? He criticized महाप्रभु के प्रभु हमारे घर में प्रसाद his guru and Mahaprabhu. है। Like what happened? गए प्रसाद खाने के लिए Ma- और बहुत he said, Prabhu, please come and take prasad in my house. Ramachandra Puri called काशी गुरु इतना खाता है Mahaprabhu to his house to take prasad. Then Mahaprabhu went there, and then what happened? He put so many food on the table for Mahaprabhu to eat like this. And then Mahaprabhu was going to eat. Then he said, oh, why are you eating so much? Sannyasis don't eat so much like this.
सन्यासी होकर के You are sannyasi. खिलाया दिया So he fed, 50 प्रकार के व्यंजन he offered the 50 kinds of preparation. Actually, he himself cooked everything. You know, he cooked सब कुछ बनाया और जब for Mahaprabhu. That when Mahaprabhu sat for eating, बोले, आप सन्यासी हो क्या oh, you are sannyasi. How possible you do that? How are you eating so much? Oh my, yeah, what is this? थोड़ा उधले वाला हाथ से खाएंगे Then सब भक्त लोग दुखी हो गए all the devotees, they became so upset. अच्छा चलो और एक बार की महाप्रभु के मैं गंभीरा में गए Another point, Mahaprabhu went to Gambhira, and then at that time there was no stone. Mahaprabhu was sleeping just on the ground, like on the soil. And then this Ramachandra Puri went to Gambhira, and to the Gambhira where Mahaprabhu used to live. अच्छा मिट्टी में महाप्रभु वैराग्य में गए अपने कपड़ा के जो है So Mahaprabhu, so renounced, he used to put his clothes on the floor and just sleep on the floor. तो मिट्टी यहाँ पे ये क्या बोले चिट्टियाँ तो ये घूमते रहते हैं So there were so many ants also there. And then सन्यासी होकर के संचय करके मिट्टी खाते हो ये खाते हो क्या बोले then this Ramachandra Puri said, oh, you are sannyasi. There are so many ants here, means you're actually eating so much sugar, you know. तो महाप्रभु की निंदा आदि करने लगे So actually Mahaprabhu was not eating any sugar, but then so he was criticizing Mahaprabhu, this Ramachandra Puri, you know. तो उसी प्रकार So in the same way, के दो प्रकार के लीला the devotees of Lord, they have two kinds of leelas. वंचनात्मक और एक Vanchanatmika, क्या शब्द बता Vanchanatmika, वंचन का so वंचनाग्रति जो निंदु पाषंडी है those who are ninduk, who are criticizers, who are pashandi, who are cruel, like evil-hearted or atheists, they are cheated. In the sense that cheated also means they will be deprived, they will be bereft of the association of that sadhu, because they will criticize and they will go away. And so this is Vanchanatmika Lila. Another kind of Lila is Prematmika Lila, means they will nourish the love and affection of the devotees, the Uttama maha-bhagavatas. और जो सेवा करने वाले जो Those who are serving, उसके आपन जन उसके ममता आदि सृष्टि कर देते then this way they will have more love and affection for them, for these Uttama maha-bhagavatas, if they become sick or something like that. वो आगे वो क्या बोला प्रहलाद मारिएगा Oh yeah, I was talking about Prahlada Maharaj. Prahlada is an eternal associate of Bhagavan. ये नहीं है जो कहने पर जो बाहर आ गया है ये केवल एक सिद्धांत नहीं है यद्यपि भागवत में लिखा है ये नहीं है जो कहने पर जो बाहर आ गया है ये केवल एक सिद्धांत नहीं है यद्यपि भागवत में लिखा है ये हिरण्यकशिपु ने कहा ये प्रहलाद तुम बताओ So in the Bhagavatam it says, Nrisimhadeva told, सर्वत्र व्यापनोति विष्णु Nrisimhadeva, Hiranyagarbha asked Prahlada, Nrisimhadeva, your Vishnu is everywhere. Is he? Then Prahlada said, yes, of course he is everywhere. Bhagavan is everywhere, why not? Is he in the pillar? Yes, of course, why not? Then Hiranyagarbha, he broke the pillar with his mace. So actually, Bhagavan himself appeared in that pillar just to protect the words of his devotee. Some people say, oh, so means actually Bhagavan was not there before. So if you want to discuss with logic, one word is there. Actually, God, to protect the words of his devotees, to protect the words of his devotees, because so like to protect the words of Prahlada, Nrisimhadeva appeared. But do you think that Nrisimhadeva was not there before in that pillar? He's actually everywhere, just like the fire. Like fire is everywhere. Then you beat, you see the fire. Actually, fire was there before. Of course, it was there before. Bhagavan is everywhere. So, which Prahlada we're talking about? The eternal associate. Parikaras is the eternal associate. Prahlada is the eternal associate of Bhagavan. There's an eternal abode of Lord called Nrisimhadam. Just like, for example, Ram Lok, Vishnu Lok, all these places. Varaha Lok is also there. The abode of Matsya, Kurma, Varaha, all the avatars of Bhagavan. So there are like 25 avatars, mainly described.
ये जितने भी अवतार भगवत के So there are धाम many जो avatars in है, the abode of Lord, many abodes. ये समस्त भगवत धाम में भगवान की जो है विग्रह नित्य कहा जाए। All these deities, ये तो they are शास्त्र eternal. में क्या कहा जाए? भगवान और भगवान के विग्रह So Bhagavan and his form are eternal. Nrisimha is also eternal. आज समझे? Do you understand? कहानी अभी आ गई। It's not that before वो नित्य है, he was not there, then he came. No, he's eternal. It's just a matter of manifest or unmanifest, invisible। visible or invisible. That's it. जैसे Just understand that. अभी For example, छिप गया। now the sun set अमेरिका में here, देखिए, वहाँ पर but in सूरज America the sun is rising. You know, right now, right? तो उसी प्रकार भगवान In the same way, भगवान की विग्रह धाम Bhagavan, his abode, his deity, his form are इसी eternal. प्रकार उनके जो परिकर आदि नित्य So his associates are also जो eternal. कह रहे हैं, कौन प्रहलाद के बारे For में example, when you talk about Prahlada, which Prahlada? We're talking about the eternal associate Prahlada. और ब्रह्मा जी की बात जो कहा गया ये हैं? इंद्र आदि ये अधिकारी जो दास है ये समस्त जीव तत्व में आ गए। But Brahma, इसलिए he and Indra, like this, they are Jiva-tattva. So try to remember two things. परिकर तत्व Jiva-tattva and parikara-tattva, there's difference. भगवान के विग्रह के साथ ही भगवान के साथ ही लीला आदि करनी The parikaras, they do lilas with Bhagavan. जीव तत्व की जो है जीव तत्व जो है ये शक्ति से प्रकट हुआ है। Jiva-tattva. तत्व शक्ति से नहीं प्रकट हुआ है। ये हाँ जीव तत्व जो है एक परिकर तत्व जो है वो सर्व शक्ति से प्रकाशित हुए है। Okay, so the parikaras, they manifest from Swarup Shakti, and the Jivas did not manifest from Swarupa Shakti. ठीक है और ये हाँ जीव तत्व जो है एक परिकर तत्व जो है वो सर्व शक्ति से प्रकाशित हुए है। शक्ति तो है They are Shakti also, और ये जीव तत्व जो है तत्व शक्ति से प्रकट हुए। but the Jiva-tattva manifests appeared from Tatasta Shakti, marginal potency, a potency called Jiva Shakti. सब शक्ति प्रकट है। ये समस्त विचार दिखा। This is the concept. इसलिए ब्रह्मा आदि जो देवता जो है So Brahma and the demigods, है जीव तत्व में आ जाता है। they are Jiva-tattva. अधिकृत दास है भगवान की सेवा कर रहे हैं। हाँ। नित्य-परिकर जैसे प्रहलाद महाराज जी हैं, ये शांत रस में है। तो जो दास तत्व में है वो श्रेष्ठ होता है। देखो इसमें एक विचार करते हैं। आप जो बात बता रहे हो ये बात अतीव सुंदर गंभीर विषय है। Actually, what he's talking about is very deep and very beautiful topic. देखो इसमें दास है भगवान की सेवा कर रहे हैं। हाँ, नित्य-परिकर जैसे प्रहलाद महाराज जी हैं, ये शांत रस में है। तो जो दास तत्व में है वो श्रेष्ठ होता है। देखो इसमें एक विचार करते हैं। आप जो बात बता रहे हो ये बात अतीव सुंदर गंभीर विषय है। कभी कभी He's asking about if some person is higher than the other because it's serving dasya-rasa, not shantaras, for example. Prahlada Maharaja is shantaras and he's eternal associate. But someone is in dasya-rasa, ब्रह्मा आदि सेवा आदि करे हैं। for example, Brahma and Shiva. ये सेवा आदि वृत्ति दिखा रहे हैं। They are Jiva-tattva and they also have tendency to serve Bhagavan, Brahma and Shiva. प्रहलाद क्या है शांत रस में ले गया। अच्छा शांत रस में वहीं पर सेवा नहीं दिखा रहे। Prahlada Maharaj, he's in shantaras, he doesn't have seva vritti, but because he's shantaras, but he's an eternal associate. हैं। और ये परिकर नहीं यदि हम इसमें विचार But like करें, Brahma and Shiva are not एक associates. परिकर तत्व एक जीव तत्व में आते So there's parikara-tattva हैं। and जीव तत्व Jiva-tattva. में आते हैं, वो Brahma परिकर तत्व में जा रहे हैं। और जब हम रस तत्व is में विचार Jiva-tattva. करें, But if you analyze Rasa-tattva, क्या बोले ये दास रस में आ जाता है वो संत रस में one comes in dasya-rasa, another in shantaras. Yes. इतना ही तो दिखाते हैं क्योंकि तथापि परिकर की विशेष वैशिष्ट्य का But still the associates, they are very special. आपके घर में आप अपने बेटा है For example, your own son, मानो बेटा परिकर हो गया your और son आपके is नौकर है आप eternal associate and compared to your servant, for example, who is higher, your servant or like a maid or your son? वो रहे काम This करे, difference ना करे, will be बेटा there. बेटा ही होता If your son works or not, he's your son, doesn't matter, right? है। रस विचार में ले जाओ कोई बात नहीं You can come to discuss in Rasa Vichar, but yeah, a son is a son, come on. परिकर Parikaras are parikaras. तत्व शक्ति कहा जाता है जीव शक्ति कहा जाता है marginal Mother from potency Tatasta कहा जाता है, Shakti. जीव शक्ति कहा जाता है अथवा तत्व शक्ति जीव नामक शक्ति से Actually, there's a potency called Jiva Shakti, which is also called Tatasta Shakti, marginal potency. जीव प्रकट हुए
और परिकर जो है वो क्या बोले स्वरूप शक्ति से The parikaras, they appeared from Swarupa Shakti, it's different. तो इसे आपने जो बोला ये भी तो मानना पड़ेगा So whatever you said, also you need to accept, of course. ठीक है What you're saying, it's true. But है परिकर आदि जो है इनके महात्मा अधिक रहता है the parikaras, they are higher. जो ब्रह्मा है उनको वृंदावन में प्रवेश मिला एक पर्वत के रूप में कौन सा जो पर्वत के रूप में हाँ पर्वत में उपासना कर रहे हैं ना कि वो हमको गोपियों की रज मिल जाए राधा जी के चरण धूलि प्राप्ति करने के लिए वो तो बरसाना में ब्रह्म पर्वत के रूप में Brahma was in Varshana like a mountain to get the mercy of Srimati Radhika. Yes. तो इससे क्या होता है वो जी बोले पर्वत के रूप में सेवा किया ठीक है He served as a mountain, he served the gopis. Yes, Brahma. रस विचार भाई यही तो मैं कर रहा हूँ This is what I'm telling. Rasa vichar and tattva vichar. ऐसे भी कहे According to Rasa vichar, yes, it's higher. इससे क्या होता है Then what is the problem? क्यों परिकर तो परिकर रहता है ना But the parikaras are parikaras. है Because devotee is saying like Brahma, he's serving in dasya-rasa. For example, like Varshana, he was a mountain serving. But like Prahlada, he's serving Shantaras. But Prahlada is an eternal associate. So Gurudev is saying, yeah, so if you compare, of course, a person who is eternal associate is higher, but depends on your comparison. If you want to analyze tattva-siddhanta or Rasa-siddhanta, according to Ras, Brahma is serving higher because he's serving dasya-rasa and Prahlada in Shantaras. But according to Tattva, Prahlada Maharaj, he is a nitya-parikar, so he's in a higher platform than Brahma, who is only a jiva, not a nitya-parikar. परिकर जो है वो रहता है जैसे मैंने लिख दिया आपके बेटा श्रेष्ठ है कि आपके नौकर श्रेष्ठ है ये बात बता दो For example, who is higher, your son or your servants? Come on. And suppose your son is the eternal associate, like Prahlada Maharaj, for example. भाले नौकर तो इसके सेवा कर रहे हैं काम कर रहे हैं बेटा क्या कर रहे हैं खा रहे पी रहे Your son is only eating and sleeping, but पिताजी के the maid or the servant of the house is like working a lot. Your son is just enjoying your wealth. This is the tattva. किस दृष्टि से आप विचार कर रहे हैं वो So, देखना। एक तत्व everything depends on which kind of point of view you're having. Rasa vichar or tattva vichar. विचार में देखो प्रहलाद श्रेष्ठ In tattva vichar, Prahlada is higher. और रस विचार In में rasa vichar, कर रहे हैं वो भी आधिकारिक दास्य Brahma- अधिकृत दास्य होकर के वो भी ऐश्वर्य युक्त है Brahma is in dasya, which would be higher. But Brahma is in dasya, adhikarik dasya, also in the service of opulence, opulent mood. So, है you know, तो इसलिए माना गया है इसलिए जब 5 प्रकार के जो भक्त के हैं So- उसमें ब्रह्मा के नाम कहाँ आ गया in the 5 kinds of devotees, the name of Brahma is not included. That's why. प्रहलाद के नाम आ गया But the name of Prahlada is there. है ब्रह्मा अधिकारी Brahma is नाम adhikarik. ही नहीं आ रहा लिस्ट में नहीं है He is not in the list of the devotees, Brahma. So तो इसमें तो सूक्ष्म विचार है ठीक है these conceptions are very subtle. प्रतिष्ठित होकर के वो कार्य आदि कर तो शक्ति से नहीं प्रकट हुए है ये हाँ जीव तत्व जो है एक परिकर में है वो इसलिए हनुमान के जब हम कहते हैं माने जिसमें कोई मिलावट नहीं ठीक तब सुधा से हनुमान में दिखाया गया इनके महात्मा अधिक रहता है आप बताते हो मन जाता है जीव शक्ति कहा जाता है मार्जिनल पोटेंसी कहा जाता है जीव शक्ति कहा जाता है अथवा तर्स शक्ति जीव नामक शक्ति से है जीव प्रकट हुए और परिकर जो है वो क्या बोले स्वरूप शक्ति से प्रकट है तो इसे आपने जो बोला ये भी तो मानना पड़ेगा हमें So whatever you say, I have to accept also. It's true. But है परिकर आदि जो है इनके महात्मा अधिक रहता है parikaras are more glorious than jivas. जो ब्रह्मा है उनको वृंदावन में प्रवेश मिला एक पर्वत के रूप में कौन सा जो पर्वत के रूप हाँ पर्वत में उपासना कर रहे हैं ना कि वो हमको गोपियों की रज मिल जाए राधा जी के चरण धूलि प्राप्ति करने के लिए वो तो बरसाना में ब्रह्म पर्वत के रूप में है ठीक है जब वहाँ पे उनको प्रवेश मिला प्रहलाद जी को तो प्रवेश नहीं मिला वहाँ पे तो इससे क्या होता है So Brahma entered Varshana, but Prahlada not. पर्वत के रूप में वो सेवा किया ठीक है He served as a mountain, yes. Brahma served as a mountain then.
यही तो मैं कर रहा हूँ, एक रस This is what I'm विचार, एक तत्व telling. विचार। There's rasa रस vichar and विचार tattva में vichar. अजीवी का है, ठीक है, उस श्रेष्ठ माना जाए। Yeah, he's उससे higher क्या होता है? than क्यों परिकर तो परिकर तर रहता है ना, in rasa vichar, but the parikaras are higher परिकर because जो parikaras है, are parikaras. वो रहता है। जैसे मैंने एक लिख दिया, Like I told, आपके बेटा श्रेष्ठ है कि आपके who is नौकर higher, श्रेष्ठ है? your ये son बात or your servants? बताओ। Tell me. भाले नौकर तो इसकी सेवा कर रहे हैं, काम कर Maybe रहे the servant, हैं। बेटा क्या कर रहा है? your खा maid रहे, पी is working in your house, your son is only रहे। पिताजी sleeping की or संपत्ति eating समझे आराम से and enjoying your wealth very nicely. तत्व दृष्टि होता है। So this is the vision of tattva. किस दृष्टि से आप विचार कर रहे हैं? Which kind of vision you have for looking? रस विचार Tattva vichar, rasa vichar. है। तत्व विचार में देखो प्रहलाद In tattva vichar, Prahlada is higher than Brahma. विचार में जो But in rasa vichar, okay, you're saying that Brahma has dasya-rasa, he would be higher than Prahlada. But he's in the adhikarik mood and also opulent mood. इसलिए इसलिए जब Adhikarik means he's only following the orders of Bhagavan because his उसमें ब्रह्मा के duty. नाम कहाँ आ गया भाई? So the name of Brahma is not in the name of the 5 kinds of devotees. The name of Prahlada is there in the name of the 5 kinds of the devotees, in the list of the 5 kinds of devotees. ब्रह्मा अधिकारी है। ब्रह्मा के नाम ही नहीं आ रहे। The name of Brahma is not in the list. सबसे So, तो इसमें तो सुख शांति से विचार है। all these conceptions are very subtle, yes. जहाँ जहाँ पर विचार करते जाओ, विचार करिले चित्ते पाइबे चमत्कार। If you consider about all this, you'll be amazed विचार in your करते heart. जाओगे, हृदय में ऐसे उल्लास होगा। You become happy if you think about all these things. तो सीखो। Anyway, it's one verse Gurudev mentioned. इसलिए आप जो बोला ठीक है। Whatever you're saying, स्वीकार करना पड़ेगा। yeah, have to accept. संतरस में लिया गया। किसको संतरस में? He's in Shantaras. Who? Prahlada Maharaj. Okay. और ब्रह्मा जी के And Brahma ji, he's in Dasya. है। वो भी दासो तो इसमें ही है, क्या बोले? आधिकारिक ऐश्वर्य मूला दास। Adhikarik Ashwarya Mula Dasya. Means he's following their orders in the opulence mood also. हनुमान में दिखाया गया। In Dasya Rasa is Hanuman. Hanuman is an eternal associate. हनुमान जो है भगवान क्या है? Hanuman, he is परिकर। a eternal associate of Bhagavan. वो सुन। वो इस दास शब्द की अर्थ हो। Dasya means सेवा भावना है। शुद्ध दास tendency to serve. है, वो रहा। शुद्ध करने माने जिसमें कोई मिलावट नहीं I mean, like nothing mixed. है। जैसे हनुमान की कहते हैं शुद्ध दास। Hanuman has Shuddha Dasya. उससे जो भाव मिलने सेवा नहीं होती है। रक्त पत्र आदि जो है इसके है, जैसे हनुमान की कहते हैं शुद्ध दास। Hanuman is called Shuddha Dasya. उससे जो भाव मिलने सेवा नहीं होती Actually, in Dasya, if there was no opulence mood, then not the tendency to serve wouldn't be there. है। रक्त पत्र आदि For जो example, है, Raktak and Patrak. दास कहते हैं, ये कभी We कृष्ण call के them दास Dasya, नहीं right? मानते। But they don't think themselves to be servants of Krishna. नंद महाराज के They feel they are the servants of Nand Maharaj, you know, दास क्या बताया जाता है? Raktak and Patrak. नंद महाराज के दास कृष्ण के मैं दास नहीं ये They don't think, oh, we are the servants of Krishna. They think we are the servants of Nand Maharaj. इसलिए हनुमान के जब हम कहते हैं शुद्ध दास So Hanuman, he's Shuddha Dasya. सेवा वृत्ति ममता युक्त सेवा Seva Vritti, he has tendency to serve with possessiveness and everything. कौन सा ब्रह्मा जी की सेवा क्या है? What is the service of Brahma? सृष्टि आदि का To create and all. But in the Brahma Samhita, there's one word. ब्रह्म संहिता आदि इस समस्त आदि करने के बाद In the Brahma ब्रह्मा जी Samhita, ये सिद्धि कर रहे हैं। Brahmaji said, ये प्रभु आप तो मुझे सब कुछ सिखा दिए, Prabhu, you have taught me everything. फिर हमें ये सृष्टि कार्य में हमें क्यों लगा रहे हैं? So why did you make me create भगवान ने क्या कि वंशित धन like Bhagavan by the sound of his flute? अर्थ में आ रहे हैं। In the last verse, we see this. कहते हैं अभी तक तुम्हारी रजोगुण है, So Bhagavan says to Brahma, you still have the mode of passion. That's why you must work, सृष्टि में do the creation. Because this comes from Rajagun, mode of passion. ये सब विचार All these conceptions are there. ये याद रखना जब हम तब Just try to remember. दो दृष्टिकोण से होते हैं। There are 2 kinds of angles of vision when you analyze the Shastras. तत्व विचार Tattva Vichar and another
Rasa Vichar. तत्व विचार में In Tattva Vichar, if you analyze Tattva Vichar, Prahlada is higher. Why? Because he's an associate. He's not Jiva-tattva, he's a parikara-tattva. रस विचार में देखे And in Rasa Vichar, इनकी सेवा वृत्ति दिखा रहे हैं। you are analyzing this tendency to serve of Brahma. प्रहलाद और ब्रह्मा जी की स्थिति कहाँ पर है? सब वैकुंठ में है। Actually, है? Prahlada ब्रह्मा जी and की Brahma, अपना ही they will not go beyond Vaikuntha, only that. विकास रस विचार में श्रेष्ठत्व देते हैं। You said that Brahma is higher than Prahlada, okay. में आ रहे हैं। But Brahma in his prayers, he's saying, Jab Gokule Opi. इस रूप में ब्रह्मा जी In this verse, Brahmaji, he's praying, हे प्रभु Hey Prabhu, वृंदावन में जन्म होने तो मेरा सौभाग्य for me, I don't have the good fortune to be born in Vrindavan. I just want to be born है गोकुल में in Gokul, है जहाँ पर जो where क्या बोले माने वो मैथरानी जो है ब्रजवासी के घर साफ कर those Vrajavasis who clean the toilets of the other Vrajavasis, when they come back to their houses, they clean their feet on a stone which stays next to their houses. I just want to be born as the stone, then my life will be successful. The commentary explains Vishwanath Chakravarti Pad. इसमें एक भी विचार नहीं है There's one conception. ब्रह्मा भगवान के साथ संबंध क्या है So what's the relationship of Brahma and Bhagavan? क्या संबंध रखते Which relationship do they have? हैं पुत्रत्व अभिमान रखते हैं Like a son. Brahma is like the son of God. भगवान के जो है नाभि कमल से Because he appeared from the lotus navel of Bhagavan. विचार में जाते हैं इसलिए वो मधुर रस में प्रवेश करने के लिए That's why he's afraid of entering madhurya-rasa, Brahma. कभी माता पिता के साथ भी संबंध आदि देखते This हैं, son, क्या करते हैं? वो एक्सेप्ट नहीं करते वो छुपा रखते हैं the son never accepts the conjugal mood he sees or anything like that. Like the son never accepts any conjugal mood between mother and father. He always like hides. He doesn't want to involve in this madhurya-rasa between mother and father. ब्रह्मा जी के सारे पता है Like Brahma knows everything. आज मैं थोड़ा बोल दूँ तो आपको If I speak too much, you'll not. लज्जा के हस्त ढक करके बोलना पड़ता है I have to speak with a limit of the माता पिता के shyness. जो संबंध है बालक Relationship. देख भी ली कभी बालक इस बात नहीं बोले है, ठीक उसी प्रकार माता पिता की जो संबंध है बालक को भी देख भी ली कभी बालक इस बात नहीं बोले For example, even if the son sees some conjugal thing between his parents, he will not want to speak about it. He will not even want to speak about it if he sees anything between his parents, like some conjugal affairs. है, ठीक उसी प्रकार In the same way, ब्रह्मा जी Brahmaji, he is like the son of Lord है, क्यों भगवान की कहाँ से निकले because he appeared from the navel of God. है, इसलिए पुत्र होने के नाते So because he's like the son, भावना रख रहे हैं the mode he has, according to this conception, is that वृंदावन में गोपियों के साथ ये जो व्यवहार आदि जो है this. ये मैं कैसे How can I accept this relationship that Krishna has with the gopis in Vrindavan? इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं So Brahma is saying, में मेरा जन्म तो सौभाग्य नहीं होगा I don't have the good fortune to be born in Vrindavan. Hey Prabhu, if I can be born रजो अभिषेक in Gokul. ये है कितने विचार जितने भी विचार पढ़ते भागवत पढ़ो एक एक करके खोल करके If you read the Bhagavatam, पन्ना एक एक करके अपने आप खोलता है ज़्यादा बोले तो आपको समझ में आएगी if I speak too much, you will not understand maybe. But if you read the Bhagavatam, then slowly, all this can open up. Slowly. है खोलता है उसने है क्यों ये बोल रहे जब गोकुल भी कतमा उम्र Why did he say like this, Brahma, that he wants to be born in Nanda Gokul as a stone, जहाँ पर कृष्ण के बाल लीला हुआ where Krishna performed his childhood pastimes? वहीं पर एक बोले वृंदावन के अंदर Not in Vrindavan, inside Vrindavan, no. है क्यों वृंदावन में जो माधुर्य के स्थान है गोपियों के Why? साथ कृष्ण के हुए Vrindavan is the place of sweetness, place of Krishna and the gopi. है उसमें संभव नहीं है शिव जी की भी प्राप्ति नहीं हुई Even Shivji did not शिव जी के साथ संबंध क्या हुआ attain it.
Shiva is like the brother. ना बात वो क्या संबंध है Sorry, which relationship? शिव जी के साथ शिव जी की भी नहीं कहा वो श्लोक है ना That sloka also is there. जिस वस्तु जो है जसोदा के जो भाग प्राप्ति हुई This bhav that Jashoda attains, not even Lakshmi Devi attains. You can check in the Chaitanya Charitamrita. Indira Ramananda Samvad. नेमं दुरिंची न भवो न श्री ओपी अंग संश्रया प्रसादो लिबिरे गोदी जत तत्प्राप विमुक्ति दत्तात ब्रह्मा शिव स्थलाश्रिता लक्ष्मी देवी प्राप्ति नहीं है Even Lakshmi Devi couldn't attain it. Not even Brahma. जो माँ जसोदा के जो भाग में प्राप्ति हुई The good fortune that Mother Jashoda obtained, माँ जी के यहाँ पर attained. Brahma couldn't attain. Brahma is like the sun, ब्रह्मा जी has the ego of being the sun, के नाभि कमल से because he appeared from the navel of Lord. और शिव जी के भी नहीं माना करते Shiva also couldn't attain it. और लक्ष्मी देवी की जो प्राप्ति नहीं Not even Lakshmi Devi. ये समस्त जो वर्णन होते जा रहे हैं ये समस्त विचार दिखा रहे हैं और सुंदर सुंदर विचार दिखा रहे हैं Very beautiful conceptions. वो दिखा तो गोविंदा आदि पुरुषों Gurudeva Brahma Samhita is speaking about opulence mood. Yes, but our acharyas, के द्वार सब माधुर्य in the commentary, they give sweetness moods explanations. Like Jiva Goswami, he explained. आनंद चिन्मय रस प्रतिभाव स्थापित रूप निज रूप तया कला इसके टीका है गोलोक धाम निज धाम में तड़ित चस्व In these verses, Golokanam Nijadhami, जैसे से अधिकारी होते उस according to your eligibility, होते उसके निकट उसी प्रकार बोलना पड़ता है you have to speak according to the eligibility of the people who you are speaking with. उस अधिकार के अनुसार बोलना पड़ता है कि शास्त्र के विचार दो प्रकार के The conceptions of the scriptures are of two kinds, Tata Vichar and Rasa Vichar. हैं जिससे विचार करोगे उससे मिलेगा इसलिए सनातन Yeah, like our Guru Vairaja saying madhurya-rasa, they see everything in this kind of point of view. Then Gurudev says, yes, that's why Sanatana Goswami, in the Brihad Bhagavatamrita, जैसे यहाँ पर रसायन चैप्टर जो है in the chapter called Rasayana chapter, दास्य सबको वात्सल्य मधुर्य किसी भी रस के श्लोक है he took verses from any अच्छा करते mood, like Dasya Saka Vatsalya Madhurya, but he gave all the explanations according to Madhurya-rasa. हैं यहाँ तो शक्कर रस के जो है इत्थम Even shlokas of Sakya-rasa. तस्सं गतनं परदैवतेन माया श्रितानां नरदारकेन सार्धं विजुः कृतपुण्य पुंजा ये शक्कर रस के श्लोक है This is a verse of Sakya-rasa. बाद इसकी श्रृंगार रस की व्याख्या करते हैं Sanatana Goswami gave explanation of Shingaras to this verse. ये जद भागवतामृतम It's the verse in the Brihad Bhagavatam. रसायन चैप्टर I mean, Bhagavatam quoted in the Brihad Bhagavatam. श्लोक क्या है शक्कर रस का Shloka is actually original from Sakya-rasa. तस्सं गतनं This shloka, Itam Satam Brahma Sukhana Bhuta. श्रितानां नरदारकेन सार्धं विजुः कृतपुण्य नरदारकेन Naradara Kena. जो है विपुल गोपी भाव में This verse completely established Gopi Bhav. नरदार नर Naradara, Nara Gopa. उनके पति Dara means wife, कहाँ पर है? गोपियों की the wife of the Gopas. है गोपों की गोप पत्नी The wife of the Gopas. नर दार के नर शब्द की अर्थ कर दिया Nara means गोप Gopas. दार शब्द को फिर दोनों शब्द को अलग करके बोलो So you can separate the two words. Naradara Kena. है नर शब्द का अर्थ है गोप Nara means Gopas.
Dhara wives. हैं और उसमें रक्षा करते जा साधन विजय पित गुण गुण कौन सा नहीं ये श्लोक का है सक्करस के श्लोक This sloka is actually from Sakaras. सतां ब्रह्म सुखानुवित्तं दस्सं गतनं परदैवतेन मैं स्थितानां नरदारकेन साधं विजय गुण ये करें कृष्ण जब सखाओं के साथ खेलकूद आदि कर रहे हैं When Krishna was playing with the Sakas, सखाओं के साथ किस प्रकार व्यवहार आदि कर रहे हैं सक्करस की कथा है। Krishna behaves with his friends in this friendship mood, कान पर चढ़ रहे हैं climbing on their कान shoulders, में चढ़ा रहे हैं उनके उच्छिष्ट आदि ग्रहण कर रहे हैं eating their remnants. ऐसे दृश्य को देख करके Seeing this, the shloka is there. Oh. अद्वैतवादी लोग इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुवित्तं ये ब्रह्मवादी लोग The Brahmavadis, भगवान के क्या मान रहे ज्योतिर्मय मान they see Bhagavan as light only. इत्थं सतां Only light. Itam Satam. इत्थं सतां यह साधु कहने से Sadhu here, साधु किसको कहा जाता है actually sadhu generally means like the Advaitavadi monis. People actually think this. अद्वैतवादी के जाओगे नाम लोग के साधु नहीं कहते If the Advait, वो क्या कहते हैं वैष्णव आप लोग के साधु नहीं मानते साधु actually, if you go to the Advaitavadi people, the monis, they will not say us. They will not call us sadhus. They will call us Vaishnavas. So they call themselves sadhus, but they don't call us sadhus. They call us Vaishnavas. So this happens also. अपने को मानते हैं Like sadhus generally are referring to these monists. अद्वैतवादी लोग जो है अपने के साधु कहते The Advaitavadis, they call themselves sadhus. हैं बाकी लोग क्या है The other people, वो सब वैष्णव they're Vaishnavas, this and that. हम लोग वैष्णव के श्रेष्ठ मानते हैं ना वो वैष्णव की नहीं जानते वो साधु नहीं मानते We believe the Vaishnavas are higher, but they don't believe even Vaishnavas are even sadhus. They don't even call us sadhus. They call us like just Vaishnav, not sadhu. हैं अपने के साधु मानते साधु कौन है They think themselves they are sadhus. जो ब्रह्म में स्थित होकर के रहते Sadhu is someone who is fixed in Brahma. That's his sadhu. हैं युक्ति दिखाते हैं शास्त्र से And they will even show logics from the scripture to justify this. युक्ति दिखाते हैं जैसे वो लोग भी युक्ति दिखाते हैं So we show logic from the scriptures to justify what we're saying, and they too, they do the same. वैष्णव के साधु नहीं मानते They don't think Vaishnavas are sadhus. कहेंगे तो इतना ही तो वैष्णव साधु को कहेंगे Maybe they'll say, okay, Vaishnava sadhu, Vaishnav sadhu. तुम लोग वैष्णव But they'll say, you are Vaishnav. They actually say, you are Vaishnav. हम लोग वैष्णव के श्रेष्ठ मानते हैं ना We think Vaishnavas are higher according to the scriptures. किंतु वो लोग कहते हैं But they say, sadhus are higher. साधु कौन है And who is sadhu according to them? ब्रह्म में स्थिर होकर के Those who are fixed in Brahma. है उसको कहते हैं इसलिए तो क्या नाम है प्रकाशानंद सरस्वती So that Prakashananda Saraswati, बोले आप साधु होकर के हैं आप ये क्यों करते he told, oh, you are sadhu, why are you doing this? ना नित्य गीत आदि क्यों करते Dancing and singing. He told Mahaprabhu. साधु एक जगह में बैठ करके Sadhu should stay in one place and think about Brahma, that's it. हैं? महाप्रभु के खाना He told Mahaprabhu, अरे सब ठीक है hey, everything's alright with you. हमारी मम्मी मिली थी हॉलैंड में I met your mother in Holland. और सब ठीक ठाक है Everything's okay. हैं? अच्छा और सब ठीक ठाक है चल रहे और वो भी सब ठीक है चल बहुत अच्छा Everything's अब okay. कब जा रही हो When are you going to Holland? अभी जाने के कोई विचार नहीं रहा You don't know yet. Okay. तो इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभुत्तम है जो अद्वैतवादी साधु लोग हैं The Advaitavadi sadhus, भगवान की अंग कांति की है, उसकी ब्रह्म ज्योति मानते हैं they see the effulgence of Lord like the Brahma, और वो ब्रह्म ज्योति संग भगवान की and they think this is higher. जो इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभुत्तम है वास्तव रूप में इस श्लोक के द्वारा सुखदेव गोस्वामी Actually, in this verse, Shukadeva Goswami, ब्रह्मवादी आरती शुरू हो गई Arati has started. ब्रह्मवादी लोगों की यहाँ पर तिरस्कृत कर रहे हैं तिरस्कृत कर रहे हैं चेस्टाइजमेंट कर He's actually chastising the Advaitavadis, monists. Like Shukadeva Goswami is saying, oh, ब्रह्मवादी का जो है
You are calling yourself Brahmavadi. Who is Brahma? Directly the effulgence, bodily effulgence of Lord. You're not seeing Bhagavan. You only see the bodily effulgence of Lord. You think the Brahma Sukha happiness of Brahma is higher. But if you compare, it's nothing. Happiness of Brahma is insignificant next to the Bhagavat Prem. It's very insignificant. Just like the firefly. You know the firefly? That insect who has some light in its back, buttocks. So it's this kind of happiness, very small, insignificant, compared to the realm of the unlimited love, Ananta Prem, Raja. Those who are like in the dasya mood, like Brahma, etc., they are in the mood of dasya. The Brajavasis, not even one will say this, like Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami. Come on. Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami. Gurudev ji pehle na khub gaata. Gurudev. In the beginning, when we were singing this song, Gurudeva said, not even one of you are real Brajavasis, huh? Why are you singing this? Brahma Samhita. Mother just showed that we'll say this. Govindam Adi Purusham, other sakas, Subal Shuddham, would they say this? Looks like sweet, huh? Govindam Adi Purusham, Tamaham Bhajami. But who will worship? In Vrindavan, actually nobody will worship Krishna like this. They call him thief, debauchee. They swear him all the time. In very sweet, like swearing words. But Brahma folding his hands, Ishara Parama-Krishna Sajdananda Vigraha Anadir Adi Govinda Sarva Karana Karana. Brajavasi look in Sarva Karan ke tu Karan hai. Brajavasi, if they would hear, hey, you think you're the cause of all the causes? Come on, crazy. You were born on my lap. How can you think you're the cause of all the causes? Hey, Krishna. No Brajavasi would say, oh, Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajam. Folding their hands, come on. No one is doing prayers like this. If there are prayers, this is all opulence mode. Yeah, in Vrindavan they do prayers. Which prayers? Stavastuti, you're stupid, nonsense, rascal. This kind of prayers. If you want to say there is some prayers, then these are the prayers. Like Srimati Radha is saying, hey Bumblebee, get out of here. Get out. Why you want to touch my feet? Don't touch my feet. Why? You are drunk. Bumblebee says, what? I didn't drink. I haven't even sat on flowers that have some fragrance. The flies, they sit anywhere, but the bumblebee only sits on So the bumblebee says, I haven't drunk, I haven't sat anywhere. You know, the flies, they sit everywhere, but bumblebees, they don't. Bumblebees only sit where there is a very fragrant flower, like big flowers, lotus flowers, blossoms. Then the bumblebee sits on this
मूर्छा युक्त जो like the bumblebee will not sit बैठती नहीं, on any like तीन होता है, flower पक्षी होता है or any like thing which is actually और एक smelly or like stinky. Never. A bumblebee will never sit on this kind of thing. There are three kinds of insects: bumblebee, honeybee, and fly. मधुमक्खी और दूसरी होता है भ्रमर, तीनों में अंतर है, There are difference in between these three. समझ में आ रही? Do you understand? तीनों में अंतर क्या है? What is the difference? मक्खी जो है वो कहीं पर बैठ जाती The fly will sit anywhere. है, गंदगी हो, दुकान पे हो, Stinky मिट्टी stuff, पर, जहाँ पर बैठ in sweets, anything. है। On sweets, on stinky और things. क्या है? मधुमक्खी कहाँ पर बैठता है? The madhumakshi means the bees, honeybees. They only sit on flowers. और भी जैसे फूल मिल जाए, दुकान पर भी मिठाई Any- वहीं पर ही बैठ जाए, Any kind of flower, even like some sweets मधुमक्खी बैठ जाती in any shop, the honeybees will also sit. है। भ्रमर कहाँ पर बैठता But the bumblebee, Brahmar, है? जहाँ जहाँ नए नए कमल खिले हुए, दिखने में भी सुंदर, only sits in like beautiful lotus flowers. And first, यहाँ थोड़ी बैठ जाएंगे वो, हैं? ये तीनों में अंतर देखो कैसे, so look at the difference between them. बताया? फ्लाई, मक्खी, दूसरी क्या है? So flies, मधुमक्खी, maki, तीसरी है madhumaki, honeybee, and Brahmar, केवल bumblebee. है एकमात्र कमल पर सुंदर, The bumblebee स्फुरित only कमल would हो, sit दिखने in the में सुंदर हो, blossom flowers, which is very beautiful and fragrant. हैं? उनकी स्वभाव दूसरी होती His nature is different. है। कितबो मधुप बंधु माँ विश्रंगी है। राधा जी भाव दशा में क्या देख रही है? Shrimati Radhika in the Bhava mode, he sees that a bumblebee है? came उनकी चरण कमल की स्पर्श करना चाहता and he wants to है। sit. बात ये सही है, It wants to sit on क्योंकि on राधा her की lotus feet. चरण This is इतनी true सुंदर सुगंध because her lotus feet are so कमल की fragrant सुगंध के भी that पराभूत defeat कर the fragrance of the lotus flower. देता है। और राधा जी की चरण की प्रस्फुटित कमल समझ करके वो भ्रमर बैठना So the bumblebee wants to sit on Shrimati Radhika's feet, thinking it's like a lotus flower. कृष्ण के दूत है, Shrimati Radhika is thinking this काचित गुप्पा bee is actually a messenger of Krishna. ध्यान कृष्ण स्मरण This bumblebee is a messenger of है। यहाँ Krishna. काची श्रीमती राधिका ध्यान में क्या देख रही है? Kachit means Shrimati Radhika, this gopi, and in meditation she's seeing मथुरा में that Krishna दूसरे स्त्रियों के साथ मिल रहे हैं। is in Mathura meeting with other ladies. She sees this and she becomes angry. है। इसलिए उनको देख करके कृष्ण ने क्या कि So, भ्रमर को यहाँ पर seeing बना this, करके Krishna came as a messenger to pacify her man. तो उसलिए राधा जी की भावना है। So this is the mood of Shrimati Radhika. तो वो बंधु माँ विश्रांगी है, दुष्ट जाओ यहाँ से, Shrimati Radhika is saying, evil, है। मतलब मेरा क्या दोष है भ्रमर करने में, मेरा get out of here. क्या दोष है, तेरी याद नहीं है, मूर्ख। Oh, what is my fault? You don't know your fault. Foolish. मेरे चरण की महिमा तू जानती ही नहीं। You don't know the glories of my lotus ये feet. सारे वाक्यालाप जो है किसके ऊपर कर रहे हैं? राधा जी कृष्ण के लिए कर रहे हैं। Actually, Krishna, Shrimati Radhika is telling all this as if she was speaking to क्यों कह रहे Krishna. हैं? तुम जैसे मूर्ख है, You are foolish, है, अब तुम्हारे स्वामी ऐसी है, and थोड़ा your सा भेजे है ना, Lord is also foolish because he has sent कपड़े you. के दूध कपड़ी होता है, छल कपट का। You are a hypocrite, just like your master. Shrimati Radhika told the bumblebee, get out of here. तो दूध के तो जो दूध होते हैं ना, मैसेंजर, The messenger, उसके कर्तव्य होता है, he just has a duty तुम्हारे चरण स्पर्श करना। to touch our lotus feet. This was the duty of the messenger. राधा जी कह रहे हैं, Shrimati Radhika says, मूर्ख कहते हो, यदि तू शराब पी करके नहीं आते, if you hadn't come drunk, तुमको मैं then अनुमोदन I could allow you to touch my देखो feet. कैसी स्तुति होती है, इसकी कहते हैं स्तुति, व्यंग्यात्मक है, परिहास। तू शराब पी करके आया, But you have come drunk. भ्रमर करने के लिए स्वामिनी ऐसे मत कहा करे। मैं तो जीवन में शराब तो बहुत दूर की बात, जहाँ पर शराब Oh, की don't गंध say है, this. वहाँ तो मैं नहीं जाता। What speak of drinking? I never even sit on anything which has like alcohol or anything like that. गंदी वस्तु में नहीं जाता। The bumblebee never goes to stinky things or bad things, isn't it? Alcohol has bad गंदा है कि दुर्गंध। alcohol has bad fragrance, like it's stinky. I don't know if alcohol is really stinky or not, but anyway. मैं गया ही नहीं, मैं क्यों दे? Bumblebee is saying, Krishna is saying, I have never even went to the, पी करके आया, I've never even gone to alcohol. No, you were drunk. I know. Your nature. तेरे It's nature. सिर ऐसे हिल रहा है, Your head is always moving because when the bumblebee is flying, ऐसे his head
is also moving and moving. Just like if you're drunk and you're like dizzy, you know. और शराब पी करके दो होता है, एक सिर घूमता है वो बक-बक करता रहता है। And also when you're drunk, your head is spinning and you speak so much also. शराबी जो होता है Like वो blah blah क्या blah. करता है? Rum, बक-बक करता है। you know, like how to say क्या बोले उसे rumbling? भी पता भी नहीं है। Not even गलत देना, no, कुछ करना करता रहता है। no even no one तू ऐसे ही तो कर। even knows what the person is saying because he's speaking so much, and गुनगुन आवाज करते हैं। the bumblebee is flying and making that sound, शब्द हो अथवा कोई शब्द हो, वो गुन 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 करते हैं। like छोटे-छोटे the humming of the bumblebee, and also his wings always making sound. So what is this? He's speaking so much, like he's rumbling, or he's anyway, this is from his wings or from his mouth. जिसके अंदर रख देते थे ऐसे सुनता था बैटरी है, बारे उसके पंखा के शब्द हो अथवा कोई शब्द हो, वो गुन 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 करते। हम लोग छोटे-छोटे थे ना, बम के पकड़ करके वो ये है माचिस के अंदर रख देते थे ऐसे सुनता था बैटरी। So when we were kids, you used to take like this bumblebee, for example, put inside one matches matches, you know, the box of the matches, and then we used to hear the sound of the wings and the sound of the insect, you know. वो काट करके बाहर चला जाता था। But then the insect would cut out from the आज समझे? matches box and would go away. हाँ, भ्रमण के पकड़ लो और पकड़ करके वो मैचिस होता है ना, उसमें बड़े-बड़े ब्रिटिश मैचिस होता था ना, बड़ा-बड़ा। Before the British matches, they were very big, ऐसे बड़ा-बड़ा। the box. So we used to take these bumblebees, put inside, and the bumblebees were inside doing them. So we were hearing them. और फिर कुछ समय के बाद वो स्वयं काट करके बाहर। Then after some time he would cut out पकड़ा and हुआ तो कोई काट देगा तो फिर। cut himself तो उसी the way out. भाई It's very dangerous. Maybe he would bite us or anything, बोले नहीं like sting us. Anyway, उसे पास ही नहीं जाते हम। so the bumblebee told Srimati Radhika, "Why are you blaming me, telling I'm drunk? I didn't even sit on anything which is stinky or bad. बोले तो स्वभाव बोले क्या है? But your nature is." घूम रहा है, हिलता रहा है, ऐसे शराब पी करके। बोले ऐसे तो तू ऐसे बकबक क्यों कर रहे? So why you're नहीं कर रहा, मैं तो सज्जन हूँ। why you're speaking like stupid nonsense things? ये तो मेरा पंखा। Oh, I'm not. अथवा सिर हिलने से I am a gentleman. This sound is just because of my wings. ये मेरा जन्मगत स्वभाव है। हमें क्या करना? My wings are my nature from my birth. This sound is coming. It's not from my mouth. It's just the sounds of my wings. What can I do? Get out of here. फिर कुछ समय चले जाने के बाद राधा जी कहते हाय हाय कृष्ण के द्वारा प्रेरित होकर के एक आए और उनको मैं सम्मान नहीं किया। Then after Srimati Radhika said, "Oh." So Srimati Radhika was like, "Why are you babbling like this?" And he said, "Look, this is all my sound of my wings." And then after he went away, Srimati Radhika was thinking, "Oh, he has come, but I did not give respect to him. Oh, this bumblebee was inspired by Krishna, that's why he came, and I didn't give honor to him. It was not proper for me to speak to him like this. Like when whoever comes in your house, whether a friend or enemy, you should honor him. But I haven't given respect to him. Even I like swore him, like I called him names, many things. But then the bumblebee came back once more. Srimati Radhika said, "Oh, you came back again." So when he was there before, the bumblebee, she was calling him names. But when he flew away, then she thought, "Oh my, oh my." One person came, I didn't give him a place to sit. It's not proper. So when he came back once more, "Hey, you came back again," Srimati Radhika says. Beautiful, beautiful katha, Brahma Gita. This is called Srimati Radhika's prayer stuti towards Krishna. She's not like Brahmaji, Govinda Madi Purusham Tamaham Bhajami. ब्रह्म सुखान उत्तम दस्संग गतनांग परदैवते। जो दास्य रस के भक्त होते हैं भगवान को
उसको भगवान मानते हैं, Those who are in dasya-rasa, they think Lord is Bhagavan. पर देवता मानते। माया सीता नरदार के जो संपूर्ण माया के द्वारा दूषित है, चित्त दूषित है, वो भगवान Those के whose साथ mind क्या समझते हैं? is under the illusion of Maya, they think Bhagavan is a normal cowherd ये boy. थोड़ी भगवान है, They do not think he is Bhagavan. है? ये भगवान कुछ नहीं। नरदेशी दुर्योधन दुशासन Like for example, Duryodhan, Dushasan, they don't believe Krishna is Bhagavan. ये तो कहते हैं, दुर्योधन तो कहते हैं Duryodhan says, कुंती के साथ संबंध होने के नाते इनके साथ just हम because संबंध जोड़ रहे he हैं। has relationship with Kunti, that's why we are connected to him. है तो ग्वाल He's actually a cowherd person. है, जैसे जूते को हम सिर पर रख दिया, Just like for example, will you put the shoes on our head? Come on. Shoes over our head. इसके क्या बोले, When दुर्योधन की बेटी the daughter of Duryodhan, Lakshmana, was kidnapped, कृष्ण के ये हरण कर दिया था ना, और दोनों Krishna जगह बंदी बनाया। kidnapped her, and then है, तब उस समय संधि करने के लिए बलदेव प्रभु आए, कृष्ण बलदेव, ये हरण कर दिया था ना, और दोनों के जब बंदी बनाया, इसके क्या बोले, दुर्योधन के sorry, not Krishna, Lakshmana was kidnapped by कृष्ण के the ये हरण कर दिया था ना, और दोनों के जब बंदी बनाया, so Samba kidnapped Lakshmana. Samba was the son of Krishna, I think son or grandson, I think son, right? So तब उस समय he tried to kidnap Lakshmana. बलदेव प्रभु आए, कृष्ण बलदेव प्रभु आए जब, चलो So Krishna and Baladev came to try to make a उस समय दुर्योधन गाली देने लगे, peace treaty because Duryodhana had like captured Samba, the son of Krishna, because he was trying to kidnap his daughter. हैं? Then Duryodhana started to call names Krishna, and he said, तुम तो गोप जाती हो, हम क्षत्रिय हैं, "You are a Gop Jati, we are Kshatriyas. बेटी के साथ कैसे शादी होगी? How can my daughter marry to you, like to your son?" है, Duryodhana chastised to Krishna, like called him names, and said, जूता है, "You are like a shoe, like shoes. ये जूते के तो हम सिर पर रख लिया था, How come we wear shoes on our heads?" Like this kind of chastising words, like नीचा देखा, calling names, बलदेव प्रभु बिगड़ गए, saying that Krishna is like very low. And then Baladev Prabhu, he was angry, he got angry. बोले मैं जुगना में डुबा दिया, Then he said, Baladev took his plow and said, "Oh, I will drown Hastinapur." That's why actually Hastinapur until nowadays is a little bit down, like under the earth. Hastinapur until nowadays has some inclination inside the तो earth. उसमें कृष्ण ने कहा था ऐसे, Then Krishna said, "Don't do this, don't do this." फिर सब आकर के उसको शादी कराया, फिर छोड़ दिया। Later on, the marriage took place between Lakshmana and Samba. ये दासं गतनां परदेवतन माया सीता नरदार के सार्धं ब्रिजु कृतपुण्य पुंजा, और सखाओं के देखो कैसे कृष्ण के साथ कैसे So the Sakas, they play with Krishna. चढ़ रहे हैं, कांध में चढ़ रहे They climb on his shoulders. हैं, इसके शक्कर के श्लोक, So this verse is from Sakara. हमारे सनातन गोस्वामी इसके क्या बना दिया, Sanatana Goswami took this verse and spoke about it as like इस शब्द Gopi Bhav, Naradara Kena. So beautiful explanation. है, मतलब जो जैसे चश्मा पहना हुआ है, According to the kind of glasses you have, lens, you see that those things accordingly, isn't it? इसलिए भाव ही हमारे प्रधान, So the bhav is the main thing, more important. क्या बोलते हैं, What is he saying? इसलिए भाव में भजन, इसलिए ब्रह्मा आदि देवता आदि So Brahma and demigods, सब आधिकारिक देवता का they are called Adhikarik Devata, आज servitual towards Lord as an obligation due to their posts. है, भजन करते करते ये सब धीरे Doing bhajan slowly, all this will be realized. ग्रंथ के पढ़ो, So read that book. Which book? Bhagavatamrita, शान चक्कर के पढ़ो, the chapter, Rasayana chapter. कितना आनंद है, Read each sloka and you'll feel so much happiness. बहुत सुंदर है, Very beautiful. हाँ, श्लोक बहुत सुंदर, This sloka is very beautiful indeed. दास सख वात्सल्य रस आदि के जितने भी श्लोक All the verses from Dasa Sakya Vatsalya. सनातन गोस्वामी, Sanatana Goswami gave explanation very sweet. इसलिए बृहद भागवतम तो ऐसे That's why Brihad Bhagavatamrita is an incomparable book.
समस्त वैष्णव ग्रंथ की एक क्या बोलते हैं निचोड़ सा है। He's like the essence of all the Vaishnava books. हाँ, गागर में सागर भर दे, सारे सागर It's like all the ocean inside one jar is the Brihad-bhagavata Amrita. भागवतामृत ग्रंथ में ही रख दिया। और वही वह बृहद-भागवत ग्रंथ की बेस करके So on the basis of the Brihad-bhagavata Amrita, all the Goswamis also wrote their books. बृहद-भागवतामृत ग्रंथ। इसलिए गुरुदेव कितने बार एक बार So Gurudeva not only once but many times बृहद-भागवत ग्रंथ he has पाठ किया था। read the Brihad-bhagavata Amrita. एकदम से श्लोक उठा के आपने बताया तो मतलब आपने कितना अध्ययन किया है इन ग्रंथों का, एकदम से उठा के आपने सीधा पॉइंट इस पर कर दिया। हाँ, ट्रांसलेट कर दिया। Did you translate? Okay, good. हाँ, क्या बृहद भागवतामृतम जब मैं भागवत करता हूँ हमारे रामचंद्र प्रभु शुरू कर देते हैं When I give Katha, Bhagavat Katha, Ramachandra Prabhu also starts बृहद भागवतामृत about the Brihad-bhagavata Amrita. It's a very good book. अंत और अस्माधुर्य Brihad-bhagavata Amrita is a very good book with all the tattva-siddhanta and Rasa-siddhanta. Everything is in it. बहुत सुंदर है ग्रंथ है, It's a very beautiful book, the Brihad-bhagavata Amrita. उसके पढ़ा करो Read it. हैं बना देती है। हाँ, साधारण रूप में लोगों की ठीक है, गोप कुमार की चरित्र कथा सुनाऊं। For normal people also, you can speak the story of Gop Kumar. It's very interesting, very simple. गोप कुमार की कथा जो है नारद जी के चरित्र जो है थोड़ा बहुत, The story of Narada Rishi is a little bit complicated, किंतु गोप कुमार की कथा जो है but the story of Gop Kumar एक छोटे बच्चे के is very easy. Like because the Brihad-bhagavata Amrita has the story of Gop Kumar and Narada Rishi. Even a kid can सरल रूप में learn this story कहानी के रूप में जो है because it's full of tattva, but it's like a story, the story of Gop Kumar, so it's very beautiful. आज है क्योंकि गोप कुमार अपने जीवन चरित कथा को अपने शिष्य Gop Kumar told his own life history ब्राह्मण के जो है to the Brahman of Mathura. माथुर ब्राह्मण के सुना रहे हैं, तत्व सिद्धांत सब भरा हुआ है। Full of tattva-siddhanta is इसी it. तत्व ने गुरु तत्व से लेकर के समस्त तत्व Guru Tattva, all the tattvas are there. हैं। आज स्वयं राधा जी गोप कुमार के Srimati Radhika herself told Gop Kumar. नाम क्या है? His name was, गोप कुमार की सिद्ध दिया नाम क्या है? the name of this spiritual form of Gop Kumar was Swarup, हैं? right? ये जाओ गोप She कुमार said, सबका है। go. Gop Kumar himself यहाँ said, सनातन गोस्वामी पाद हैं, सखर रस की कथा को तुलना दे रहे हैं। Sanatana Goswami Pada gave example. ये गोप कुमार किस रस के गोस्वामी पाद हैं, सखर रस की कथा को So Sanatana Goswami gave example of Sakyaras Katha. प्रश्न होता Some है, question arises. ये गोप कुमार किस रस के था? Gop Kumar was belonged to which ras? Sakyaras, yes. रस क्यों बताया गया? But why Sakyaras? हैं? एक साधारण लोग सखर रस तो पूछ सकता है। A normal person can attain Sakyaras. साधारण लोग है वात्सल्य अथवा माधुर्य रस के कहने पर वो लोग साधारण उसके जड़ बुद्धि कर लेते हैं। Generally, माधुर्य रस तो बोलना ही नहीं चाहिए। if you speak about Vatsalya-rasa or Madhurya-rasa, people think in a material way. Even much more Madhurya-rasa. Even Madhurya-rasa, you should not even speak about it because people will think in a material way. What did I say? माधुर्य रस के तो बोलना ही नहीं चाहिए। Should not even speak about Madhurya-rasa to like कहाँ तक बोल सकते हैं? सखर रस people, normal people. You can speak until Sakyaras. वात्सल्य रस के समान Maximum little bit of Vatsalya. Srila Bhaktivedanta Saraswati Prabhupada, लेख में लिख रहे हैं। he wrote in an article, कौन? एक लेख में Bhaktivedanta Prabhupada, आर्टिकल में लिख in one article he said, ये साधारण लोग जहाँ पर बैठते हैं if normal people are sitting in the audience, कथा बोले how to speak Harikatha about God? कौन सा रस की कथा बोले? Which kind of ras? उसमें एक प्रश्न कर रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। So the answer is, प्रभुपाद की उपदेश बोली प्रश्न और उत्तर। Bhaktivedanta Prabhupada has one like kind of उसमें प्रभुपाद text of question and answer. So Prabhupada answers. लोग बैठे हैं, Normal people are sitting should speak only about Dasya and Sakyaras. अधिक रूप में कहें
Maximum, you can speak a little bit of dasya-rasa, maximum. माधुर्य रस की तो But madhurya-rasa should not speak at all. क्योंकि Why? ना माधुर्य रस की कथा बोले लोग साधारण If you speak about madhurya-rasa, और प्राकृत भाव ले people think it's like normal भगवत संग अपराध कर देते material modes from this world, and in this way they'll commit offense. ये काम ही बोल रहे They'll think Krishna is a lusty man, हैं पीछे पीछे दौड़ रहे हैं गोपियों की क्या बोलते हैं that Krishna is running behind the gopis and stealing their clothes like a lusty person, रास कर रहे हैं doing the ras, this and that. के प्रति प्राकृत भावना So they'll have material mood towards Krishna, है किंतु भगवान की दिव्य material conception, but ये नहीं होगा they'll not think that leelas of Bhagavan are eternal and transcendental. They will not be able to understand it. रस कहें तो जैसे And if you speak about Vatsalya-rasa, they'll think, oh, just like इसी प्रकार जन्म ले रहे a son is being born from the womb of a mother, Krishna is also taking birth like this. Oh, भगवान कैसे so how he is God? How possible? इसलिए साधारण लोग इसको समझ नहीं पाए That's why normal people can also not understand also. But if you say Sakaras, people will agree, oh, nice. How Krishna is playing with his friends, then people can understand. जैसे वो कथा प्रसंग होता है Like for example, that story. ऋषि रमन Once Durvasa Rishi, he was in the Raman-reti. He came to Raman-reti and Krishna was playing. करते करते सखाओं के साथ झगड़ा हुई And then they had a fight with his friends. मैं जीत गया Krishna said, I won. कृष्ण Come here. कहते हैं, मैं जीत गया Krishna said, I won. Saka Savashidam said, we won. अभी निर्णय कौन देगा So who will decide? कृष्ण कहने बोले चलो एक Krishna said, okay, let's do one thing. There's a sadhu nearby. Which sadhu? दुर्वासा बैठी Durvasa was sitting there. दुर्वासा साधु तो निरपेक्ष होते हैं ना The sadhus are near a picture. They don't take sides. सखाओं के साथ Okay, so he can decide. So Krishna came with his और friends. दुर्वासा ऋषि And to Durvasa Rishi, Durvasa was sitting in meditation. दिव्य मूर्ति And he saw the divine form of Lord. सुंदर दिव्य Wow, so beautiful form. साधारण व्यक्ति नहीं। Durvasa is not an ordinary person. कृष्ण कहने लगे संत Krishna महात्मा told बता कौन हार his गया, saint, कौन जीत गए tell me, who won, who lost? You tell me. दुर्वासा ऋषि कुछ नहीं बोल रहे हैं कृष्ण Durvasa didn't say anything. वाणी निकालते हैं शब्द He निकालते was just hearing हैं the sound coming from Krishna's mouth, such a sweet sound. इसलिए तो हमारे श्रील माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ में So in the book Madhurya Kadambini, चक्रवर्ती Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, he wrote भगवान की मधुर जो वाक्य जो वाणी जो है the sweet उसका सौ voice of Lord is very special. सौ कुमार जो So many sweetness. बन होते जाए So Kumare, so Sarja, हैं। so Rabya, भगवान sweet की fragrance जो कथा of the निकालते हैं ना, voice of God, मधुर sweet होता है, fragrance of his smell of his body. अद्भुत करने वाले हो। If you hear the voice of God, his voice is so sweet that your heart will melt. वर्णन होते हैं। Madhurya Kadambini book explains, and according to the kind of devotee, भगवान Bhagavan व्यवहार अधिक will behave accordingly to the different kinds of devotees. कितने सुंदर जो दास्य रस के So beautiful, those who are from Dasya-rasa. भगवान उसको क्या करते हैं चतुर्भुज रूप में प्रकाश करके Bhagavan appears in front of them as with four arms, and then with his conch, Bhagavan touches the devotees. भगवान की दिव्य मूर्ति दर्शन And then the devotee has the darshan of the beautiful form of Lord and faints. भगवत दर्शन में कितने होता है So much happiness in Bhagavan. ओहो Then Bhagavan says, oh my, मेरे भक्त तो मूर्छित हो गए my devotee has fainted. भगवान क्या करते हैं उनके सुंदर सुसर Then Bhagavan सुंदर स्वर manifests his soul swarja, के द्वारा beautiful इतने voice, सुंदर मधुर वाणी होते हैं मिठास such a वाणी, sweet उसे sound. व्यक्त कर नहीं सकते We cannot even describe it. इतने सुंदर से भक्त की पुकार Then Bhagavan की मुखारविंद की उस स्वर से calls out the devotee, and then hearing the sound भगवान के दर्शन of Lord's mouth, the sound, then the devotee wakes up and looks towards Bhagavan. भगवान के दर्शन के लिए फिर पुनः भक्त के Then the devotee sees Bhagavan, then again the devotee faints. आज फिर मूर्छा भंग भगवान मूर्छा भंग कराते हैं Then Bhagavan wakes up, like makes the devotee come back, like come to his consciousness back. शक्कर रस के हो उनको हाथ पकड़ लेते हैं If the devotee is from Sakaras, Bhagavan catches his hand, क्या बोले like takes his hand. If the devotee is from Vatsalya-rasa, क्या कहते हैं उसके चुम्बन आदि करते Bhagavan जैसे माता पिता kisses him. बालक के क्या बोलते Just like है ना? mother and father, ऐसे सुनते हैं they sniff, like take the smell from the head of the child. केसों से बिछा दे हैं माता पिता छोटे बच्चा को क्या करते हैं
जैसे कि माँ क्या करती है, बच्चा को गोद में रख करके ना ऐसे उसके So the mother and father take the kids on the lap and they sniff the head of the child, take smell from his child head, kiss him. ये समझते भगवान इसी प्रकार भी करते रहते, जैसे कि सौसर्य So Bhagavan also the same with the devotee. फिर भगवान क्या करते, देखा भक्त मूर्छित हो गया, फिर अपने सुंदर Then Bhagavan says the devotee has fainted. Then the God manifests his beautiful sweet fragrance of his body. भक्त जग जाते And then the devotee wakes up. उदास करते रहते हैं। भगवान कहते हैं, ये मेरे भक्त, Bhagavan says, oh my devotee, कितने जन्म मेरे लिए तुम तपस्या आदि किया, you're performing hardest steps for me for how many lives? होगा You have faced so many sufferings and I cannot give anything to you. दैन्यात्मक वचन आता है। Then Bhagavan has so many humble words, speak in a very humble way to the devotee. उस समय भगवान कहते नहीं भक्त हैं, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। Then Bhagavan says, कितने कष्ट स्वीकार किया धूप में, oh my devotee, you are so dear to me. You have accepted so many sufferings, like you have been tolerating rain, sun, scorcher rays of sun, and has done होने के नाते so many austerities for me. दर्शन नहीं दिया। Because my heart is so hard, इसी प्रकार क्या होता है? I didn't give you darshan before. So God speaks with such humble words. Anyway, he's going, oh, give prasad to him. कितना सुंदर रक्षा दी। So beautiful explanation. चलो नीचे चलते हैं, अभी क्या हो रहा है? I also need to go. माधुर्य रस के भक्त के क्या करते हैं, आलिंगन करते हैं। So devotees from madhurya-rasa, Bhagavan embraces him. कौन से गाना छोड़े जो माधुर्य गाने में नहीं जानते हैं? ये देखो बहुत सुंदर सुंदर है। अच्छा इसे सबको प्रसाद चल बंद कर दिया। So I'll finish now. Give prasad to everyone. सौकुमार जो सौरस्य उदार जो उदारता है, अपने अधर आदि सौरस्य को पान कराते, So rasa. पान कराते। So God gives the nectar of his lips to the devotee. The devotee is in madhurya-rasa. सौसर्य सौरभ्य सौसर्य सौकुमार्य और सौरस्य औदार्य और कारुण्यता प्रकाश करते हैं। ये सात एक ही साथ में So 6 sweetness at the same time Bhagavan gives to the devotee. माधुर्य रस में प्रकाशित करते हैं। वो भी किस In madhurya-rasa he manifests. But this is only if God in the form of Chaitanya Mahaprabhu, in the form of Krishna, no. द्वारा प्रकाश करते हैं और महाप्रभु ने औदार्य और कारुण्य की प्रकाश कर देते हैं। महाप्रभु के रूप में आकर कृष्ण के रूप में कर नहीं पाते। In the form of Krishna he cannot do that. In the form of Krishna he only manifests 5. औदार्य और कारुण्य की प्रकाश कर देते हैं। But in the form of Mahaprabhu he manifests Audarja and Madhurya, same, at the same time. If you read Bhagavatam, you'll become so happy. You'll feel so much happiness. Take the Mahaprasad. Where are you going? Jai Srila Gurudev ki jai.